Good morning student, welcome back to Math for class 12. Today is the topic linear differential equation. First order linear differential equation. Okay, today very important for competition or for examinations. Okay, first derivative dy dx plus py equal to q. This is a first order derivative differential equation. Py. Then find solution if integrating factor is denoted by if, short name if. Okay, mostly use of if equal to e raised to integral p dx. Okay, integral p dx. If number 1, number 2 of first order differential equation, linear differential equation in the form of dx upon dy plus px equal to q. So then find if factor. If is integrating factor. Okay, e raised to p dy. Okay, this change to dy. Clear? And this solution of this equation, solution y dot if equal to integral q multiply if factor into dx plus c. This is a solution of the linear differential equation of first order. And this type equation, solution of this type equation dx upon dy. So dx, the x multiply if, this if, okay, equal to integral q multiply if into dy plus c. This is the solution of the linear differential equation. Clear? In this type question, solution x if, and this type y form of y and if. Mostly question is this way, question type. So now let question number 1 solve. First, dy dx 2y plus 2y equal to sin x. Okay, so comparing p dy dx plus py equal to q. So p equal to 2 and q equal to sin x. So first solution, find if integrating factor. Integrating factor if, short में नेम लिखना है if. E raised to integral p dx, dy dx, we use p dx, this first, equal to integral e dt 2 dx equal to e raised to 2 dx means x, integral dx का x हो गया, and this equal to right, if equal to this, and solution formula if equal to into qif dx plus c. Use this formula, y into if equal to e raised to 2x plus integral q equal to sin x if e raised to 2x dx plus c. Okay, so this is a product rule. So this is equation number 1. This is a I means integrating. So now let I equal to, firstly find this I, and then after putting in the equation 1, I integral sin x e raised to 2x dx using product rule. So this first and second, first sin x integral e raised to 2x dx minus integral d dx of sin x into integral dx, and dx no c. Okay, so this sin x integral e raised to 2x upon 2, okay, directly equals minus integral d dx of sin x cos x integral e raised to 2x upon 2, clear, and dx, and again solve.
upon 2 sin x minus this 1 by 2 and take cos x this first and this second. तो cos x integral e raised to x ये same by 2 minus integral ddx of first minus sin x ddx integral this e raised to 2x upon 2 dx bracket closed and this c, okay, c1 c2 and change to c, right. So e raised to 2x upon 2 sin x minus this multiply 1 by 2 1 by 2 1 by 4 e raised to 2x cos x minus minus plus into minus minus and 1 by 2 into 1 by 4 sin x e raised to 2x plus c 1, okay. This solution equal to I, okay. This is also I, this form I equal to e raised to sin x e raised to x, ये रिपीटेड होता रहेगा, कभी एंड नहीं होगा. दिस टाइप के क्वेश्चनों को ही हम आई लेते हैं, ओके. या तो डायरेक्ट इंटीग्रल हो ही जाएगा और नहीं होता है तो उसको ऐसे करके. तो दिस इज इंटीग्रल्स, क्लियर. तो इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन, दिस इंटीग्रल, सॉरी भूल गया, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल साइन एक्स ई रेज टू एक्स, दिस बचा. फिर ये रिपीट होगा, मीन्स लौट के उधर ही आ गए हम फंक्शन पे. तो देन यूज इट ऑल्सो आई, दिस वैल्यू इज ए आई, आई लेके चले, सॉल्व हो गया, देन अगेन आई, ऐसे रिपीट होता चलेगा तो इसको आई मान लेंगे. तो आई इक्वल टू ई रेज टू 2x अपॉन 2 साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 4 ई रेज टू 2x कॉस एक्स minus 1 by 4 और this value integral, only this value is I, तो this 1 by 4 I, clear. I वन साइड कर लेते हैं इस टाइम में. I माइनस माइनस प्लस 1 by 4I इक्वल टू ई रेज टू 2x sin x अपॉन 2 minus 1 by 4 e raised to 2x cos x, right. And again I this LCM 5I upon 4 equal to 1 by 4, which is common. So this 2e and e raised to 2x sin x minus e raised to 2x cos x. 1 by 4 cut. I equal to e raised to 2x common upon 5 2 sin x minus cos x. This putting in 1. This c1. This value putting in 1. So 1 equal to y dot e raised to 2x equal to this value, so e raised to 2x upon 5 2 sin x minus cos x plus c1 plus c, okay. तो this is also c only this मिल में मिल जाएगा, कांस्टेंट एक ही हो जाता है. y dot do this e raised to 2x upon 5 2 sin x minus cos x plus c, okay. This is also c. तो जानते ही हो ना, कांस्टेंट में सी हो जाए. तो ई रेज टू एक्स डिवाइड कर दो तो y इक्वल टू, ये तो कट हो गया, तो 1 by 5 2 sin x माइनस cos x प्लस c अपॉन ई रेज टू 2x. y इक्वल टू 1 अपॉन 5 2 sin x माइनस cos x प्लस c e रेज टू माइनस 2x. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ general solution. This is general solution of the first question, clear. Only general solution in today, tomorrow PS solution, okay. So question number 10 11 and 12 deleted. By CBSE, sorry, okay. तो क्वेश्चन नंबर ये सब इसी टाइप के क्वेश्चन है, तो 9 क्वेश्चन ले लेते हैं. इसमें जो है थोड़ा सा वर्क है इसके अंदर. डी वाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट
x equal to 0. So change in dy dx plus y equal to q form. So taking common, that is divide by x on both sides. So this divide by x, this divide by x, this x, so x cut dy dx y upon x minus 1 plus y cot x equal to 0. So dy dx, change in first order derivative, linear differential equation, and y upon x in this y common, तो 1 upon x plus cot x, और 1 को ट्रांसफर कर दो, ये x हो गया, राइट. तो ओनली क्या होना चाहिए, दिस dy dx प्लस y equal to q, right. This is a first order linear differential equation. इससे तो q, तो py, therefore comparing p equal to 1 upon x plus cot x, q equal to 1, right. So find integrating factor if equal to e raised to integral p dx. Use this formula, okay. This dy dx, the integral p dx. E, integrate p equal to 1 upon x plus cot x whole dx. This equal to e raised to integral 1 upon x dx plus integral cot x dx, okay. if equal to e raised to integral this log x plus log cot x, integral cot x, so log sin x, okay, plus value. So this property of log property, log x plus log y equal to log xy, so e raised to log x sin x, okay, dot product, तो बनिए. तो if equal to e raised to log in this, तो this equal to if equal to x sin x by, देखो लगा देता हूँ, by e raised to log y, ये लिख देते हैं z, ले दो z, e raised to z, तो सॉल्यूशन होगा z ओनली, ओके. इसका e रेज टू पावर से पावर हट जाएगा और ये क्या बन जाएगा, z आ जाता है. ये प्रॉपर्टी फॉर्मूला है, ओके, याद करने का. if इक्वल टू x sin x, तो सॉल्यूशन ऑफ दिस लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y if इक्वल टू इंटीग्रल q if dx प्लस c. यूज दिस फॉर्मूला. if इक्वल टू x sin x, ओके, इक्वल टू इंटू q इक्वल टू 1 और multiply if equal to x sin x dx plus c. So use product rule. into 1 तो x sin x ही रह गया, तो x sin x है this first और this second. तो first x integral sin x dx minus integral ddx of first 1 and dd integral second minus cos x dx plus c. x इंटीग्रल दिस माइनस है ना, इंटीग्रल में साइन का माइनस कॉस होता है, डिफरेंशियल प्लस, ओके, माइनस और दिस माइनस प्लस, तो इंटीग्रल हो गया कॉस एक्स dx प्लस c. क्लियर. दिस मल्टीप्लाई, राइट. तो दिस इज इक्वल टू माइनस x cos x प्लस इंटीग्रल cos x प्लस sin x प्लस c. चेंज ऑफ दिस फॉर्म. एंड y x sin x equal to, this is equal to minus x cos x plus sin x plus c. Okay, so divide by
और y इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस c अपॉन एक्स साइन एक्स. ओके, साइन एक्स कट एक्स कट माइनस कॉस वाई साइन कॉट एक्स प्लस 1 upon x plus c upon x sin x. That your answer. Okay, this is the GX general solution of the equation. Solve this exercise. Only question number 1 to 9 only. Okay, 1 and 9 already given, so homework 2 to 8 हो गया. If any doubt you can ask to me. Okay, and tomorrow will be solve of the particular solution by IF factor method of the linear differential equation. Clear? Thank you.